Okay. Last day, uh, I have discussed all about the meter bridge and theoretical parts of this experiment has already been discussed, and also animated video regarding this experiment has already been shown, and a simulation, which is the actual virtual lab activities that has to be performed today. So first of all, try to uh, understand how to connect the apparatus for the experiment. You know, well, here we have to determine the unknown resistance of material of a resistor, and so also determine the specific resistance or resistivity of the materials. This is meter bridge you see here, and there are two gaps here. One of the gap will be connected with resistance box, and other gap will be connected with the wire whose specific resistance is to be determined. So try to understand first. First of all, we connect here resistance box in this gap. Yes, resistance box. Right now you see here no resistance from the box has been inserted into the circuit. That is 0 ohm resistance has been inserted into the circuit. So for that one, we have to take out one of the key from the resistance box in order to insert the resistance into the circuit. Insert the desired resistance. Usually we insert first a small resistance into the circuit. Therefore, make sure that you must take out the key corresponding to low resistance. Okay. And now we have to connect battery. So you see here, negative terminal of battery is connected with this terminal, and positive terminal of battery is connected with this terminal with the help of a key. And now we have to select a resistance wire. Resistance wire, just take resistance wire has come here. This is unknown resistance that has to be determined. And now experiment is to be started. So before starting, we have to insert resistance into the circuit. So try to understand, first of all, let me insert resistance. Let's check. Okay. Okay. Now you look here. This resistance box consists of various key corresponding to resistance: 1 ohm, 2 ohm, 50 ohm, 20 ohm, 5 ohm, and 20 ohm, and so on. 2, 5, 20, and 10. So whichever you need, take out the key. So you know well that during this experiment, first of all, we must insert resistance of a smaller value. So say 1 ohm resistance has been inserted into the circuit. By taking out the key from this resistance box. Now, you see here 1 ohm resistance has been inserted into the circuit, come into in series with the meter bridge.
Now, one of the keys here has to be inserted before starting the experiment. So insert the key. Now key has been inserted. Now we have to check out whether our connection is right or not. So first of all, you just need to take the jockey key at this end. This is positive end and this is negative end, and you have to see whether the deflection is in opposite direction when you take the jockey key here. If you take the jockey key at this end, you will see the deflection at the deflection in the galvanometer in opposite direction. And then let us check it from here. So we take it to 100 centimeter. You take here. You see here, deflection is in this direction. Okay. And now you take this at this end. Okay. You see, yeah, deflection is in this direction. Yeah. So now connection is right. Connection is right. Okay. Now we have to do okay, we have to find out the null point. We have to find out null point. Null point means where galvanometer's deflection is at 0. So just try to understand. Okay, just a little bit. There is an error, might be. Let me check it manually, slide it. So okay, right now it is at 25 cm. In order to search out null point, it must be somewhere. This is 22, so it might be 20. Null point might be at 20. Okay, there is a error in the galvanometer because 21, okay, and 21, 18, 19. Even at 20.6 cm, it is not at 0, but if you shift it at somewhere, we have to adjust it at 0. So if it is not so, just we have to assume that it is, it might be at 20. It might be at 20. Okay. So in this case, you may note null point is at 20 cm. Okay. क्योंकि ये देखिए 21.5. Okay, so it might be at 20 cm because it is 20.6 cm. So at 20.6 cm, pointer is here. So we assume that if it is 20 cm, then pointer will be at 0, and that will be null point. So here your L is, length L is 20 cm. So length A to B is 20 cm, and here it is A, and here it is C. So A to B is 20 cm. So
B to C is 100 minus 20 cm that we have to calculate. And then we apply the formula theoretically. Just note down the table. Here table has been given. Now, once more, you have to do the experiment by interchanging. Remove key and interchange a battery and resistance box. Battery is connected here and resistance box is connected here for the same resistance, that is for 1 ohm, and you perform the same experiment. Again you get the length, balancing length, and then now you have two balancing length, L1 and L2. Now take the mean value of this one, L1 plus L2 divided by 2. This mean value give you L. Now, knowing this L, you can calculate using now Wheatstone, balanced Wheatstone bridge, X divided by R equal to 100 minus L divided by L. And here X is unknown resistance and R is this one, 1 ohm resistance. So X is to be determined. So X equal to 100 minus L divided by L into R. Overall, so here 100 minus 20 divided by 20, that is 80 divided by 20 equal to 4. So X value is 4 ohm. As we have calculated 4 ohm resistance of this wire, you see here this wire. Now we have to calculate a specific resistance of this wire, that is rho, the resistivity. You know well that R equal to rho L by A, therefore rho equal to R into A divided by L. And here we will take L, that one, जो मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से, तो उससे कैलकुलेट कर लेंगे. तो एक प्रकार से ये आपको समझ में आ गया. और फिर से देखिए, फिर मैं रीसेट कर दे रहा हूं इसको और इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे. ये आपने समझ लिया है. जो नए लेट में बच्चे ज्वाइन किए हैं उनके लिए अभी 4 बच्चे ज्वाइन किए हैं. फिर देखो मैं इंसर्ट कर दिया और इसमें हम इसको एक बार और हम इसको इंसर्ट रिमूव की करके और इसमें हम दूसरा रेसिस्टेंस डाल रहे हैं. मान लीजिए कि 2 ओम का रेसिस्टेंस हम डाल देते हैं. और अब जरा देखते हैं की को इंसर्ट करके, और अब इस केस में देखते हैं कि क्या पोजीशन है, कि नल पॉइंट हमें मिल रहा है कि नहीं. यस, यहाँ पर ये देखिए नल पॉइंट हमें कहाँ पर मिल रहा है, जरा देखना. इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये एग्जैक्टली नल पॉइंट पर फिट नहीं हो रहा है. ओके, तो देखते रहना है कि लगभग हम मान लेते हैं कि अभी 34.6 सेंटीमीटर पर है. तो 34 पे हम मान के यहाँ चलते हैं कि 30 पर आएगा. 30 पर आकर के या 33 पर आकर के ये नल पॉइंट मिल जाएगा. और अगर हम 5 ओम लेते हैं तब जरा देखते हैं. ओके, और देखते हैं कि इस केस में क्या आ रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है कि नहीं. तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि नल पॉइंट हमें अज्यूम कर लेना होगा क्योंकि वो 0 पर आकर के सेटअप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम डिजिटली इसको स्लाइड कर रहे हैं. मैनुअली करेंगे तो नल पॉइंट कहीं मिलेगा. ओके, यस. तो आपने ये सीखा कि मीटर ब्रिज का यूज करते हुए अननोन रेसिस्टेंस, अननोन वायर का जिस वायर का रेसिस्टेंस पता नहीं है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं.
फिर हम की को रिमूव करते हैं और एक बार फिर से रीसेट कर देते हैं। रीसेट हो गया। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पूर्व हमें करना क्या है, एक बार फिर से थ्योरी में चलिए। थ्योरी में आइए। ये मीटर ब्रिज है, एक्स अननोन रेसिस्टेंस है, आर जो है वो रेसिस्टेंस बॉक्स से जो रेसिस्टेंस हम इंसर्ट करेंगे वो है, और एल जो हमने बताया था कि जो मीन लेंथ हम लेते हैं वो है, इसलिए 2 बार लेंथ हमें लेना पड़ेगा, एक बार इंटरचेंज कर लेंगे और इस तरह से। तो ये थियोरेटिकल पार्ट है। अब प्रोसीजर पर चलते हैं। प्रोसीजर एक बार फिर देख लीजिए। ये आपका मीटर ब्रिज है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, स्लाइड वायर ब्रिज जिसे कहते हैं, लैकलेंस सेल, या यहाँ पर हमने बैटरी लिया, लैकलेंस सेल, गैल्वेनोमीटर लेना है, रेसिस्टेंस बॉक्स है, जॉकी की है, वन वे की है, रेसिस्टेंस वायर है, स्क्रू गॉज है और मीटर स्केल है, कनेक्टिंग वायर है। और स्टेप आपको कल बताए थे कि इसको सर्किट डायग्राम बना के उसमें अरेंज करेंगे और कनेक्ट द रेसिस्टेंस वायर इन द लेफ्ट गैप। रेसिस्टेंस वायर को लेफ्ट गैप में हम कनेक्ट करेंगे एंड रेसिस्टेंस बॉक्स इन द राइट गैप। चूंकि इसमें डिजिटली फिट है इसलिए वो डायरेक्ट लेफ्ट में ही रेसिस्टेंस बॉक्स ये होता है, लेकिन फिर मैं अभी ऐसा करता हूँ। नाउ इंट्रोड्यूस सम रेसिस्टेंस इन द सर्किट बाय टेकिंग आउट रेसिस्टेंस। ये भी मैंने बता दिया कि हम 1 ओम का रेसिस्टेंस प्लग की उसको इंसर्ट करेंगे, तब ब्रिंग द जॉकी की in the contact at the one end and then other end, and we have to note down whether deflection is or deflection of pointer is in opposite direction or not. फिर है गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट गैल्वेनोमीटर कनेक्शन इज राइट and there will be null point somewhere between 2 ends, that is A and C. Or if not so, then change the resistance in the resistance box and repeat the process. अब करना क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर shows 0, ये तो डिस्कस कर दिया गया था। रिपीट द एक्सपेरिमेंट different for different value of R and the balancing length is measured in each time. R अलग अलग चेंज करेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग लेंथ each टाइम में मेजर करेंगे। नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स, और उसके बाद रिपीट द एक्सपेरिमेंट। नाउ वी कैलकुलेट अननोन रेसिस्टेंस। ओके, और ये तरीका है। तो अब फिर हम चलते हैं, एक बार फिर आपको समझाते हैं। सिमुलेटर पर जाते हैं और ये आपका सिमुलेटर है। राइट गैप में हम रेसिस्टेंस बॉक्स को देंगे और लेफ्ट गैप में हम कोशिश करते हैं कि इसको वायर को दें, लेकिन ये इसमें फिट ही किया हुआ है ऐसा कि ये जब भी आएगा तो राइट गैप में ही आता है। अभी इस हिसाब से आप देख रहे हो, लेकिन है ये लेफ्ट गैप में ही, क्योंकि यहाँ पर सिमुलेटर है। जब हम एक्चुअल लैब में हम होंगे तो ये हमें राइट गैप में दिखाई पड़ेगा, ये लेफ्ट गैप दिखाई पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें खड़ा होना चाहिए इधर से। स्केल किधर है, इधर है, तो उधर अगर हम खड़ा होते हैं तो ये लेफ्ट आएगा। ओके, और ये इंड ए होगा। अब रेसिस्टेंस बॉक्स को राइट गैप में देते हैं, यहाँ आ गया। अब एलिमिनेटर को देते लैकलेंस सेल को कनेक्ट करते हैं। लैकलेंस सेल को कनेक्ट करेंगे, ये इंड ए होगा और ये इंड सी होगा। तो ये देखिए लैकलेंस सेल कनेक्ट हो गया और ये वन वे की है। तो ये आप समझ गए हैं। नाउ अब ये सारा कनेक्शन हो गया। अब हमें सर्किट में एक रेसिस्टेंस इंसर्ट करना है जो कि यहां से होगा। लेट मी सी, यहां से होगा।
कितने ओम का रेसिस्टेंस देना है ये देखिए। तो सेलेक्ट रेसिस्टेंस, तो स्मॉल रेसिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम 1 ओम पहले हम सेलेक्ट करते हैं, 1 ओम सर्किट में इंसर्ट कर दिए, हो गया। अब आपको करना क्या है, की को इंसर्ट कर देना है। ये जो देखिए की है, ये इंसर्ट कर दिए, की इंसर्ट हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। तो हम जॉकी की को एक बार इस एंड पर रखते हैं और एक बार इस एंड पर रखते हैं, तब देखते हैं कि हमारा डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि नहीं। पहले ये देखिए, मैं देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, हो रहा है। ओके, और अगर इधर लाते हैं, इधर लाते हैं, जरा आपको ध्यान देते रहना है कि कहाँ पर नल हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। अभी कितने पर आया है देखिए जरा, अभी 19 है, वही 20 होगा बैलेंसिंग पॉइंट। आई होप सो, आई होप सो। इक्कीस, ओके। तो आई होप दैट इट विल बी एट कुछ एरर हो सकता है, क्योंकि अभी 18 पर आ गया, 18 पर आ गया है, क्योंकि काफी इसको 17, 15 जो भी है, आप जरा ध्यान देते रहोगे कि किस पर जीरो आ रहा है, किस लेंथ पर। गैल्वेनोमीटर चूंकि जीरो पर स्टे नहीं कर पा रहा है, सिमुलेशन में फिटिंग में एरर है, फिटिंग किया हुआ है इसमें ऑलरेडी, एनिमेशन जो किया हुआ है उसी में ऐसा है। तो हमें अज्यूम कर लेना होगा कि मान लीजिए कि अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है और 18, तो हम यहाँ 18 पर आ रहा है, और मान के चलते हैं कि इसको 15 पर जा करके बैलेंसिंग पॉइंट होगा। अब एक बार नोट कर लिए, ये मान लीजिए ये 15 है, एक बार और नोट कर लेते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स इंसर्ट करके दूसरा रेसिस्टेंस बॉक्स दे देते हैं। अब दे देते हैं 2 ओम का, और इसको हम रहने देते हैं। अब हम फिर स्लाइड करते हैं। पहला नोट कर लिए आपकी लगभग आपका 15.6 के करीब रहा होगा। अब आप फिर से इसको स्लाइड कीजिए और देखिए कि जीरो कितने पर आता है। ओके, ये 18 है। तो इस केस में भी हम मान के चलते हैं कि समवेयर 15 के अराउंड आएगा या 16 के अराउंड आएगा। ओके, तो अब हम 15 और 16 का जो हम मीन वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू आपका जो L का वैल्यू होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला पर पुट अप करके उसको रेसिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया। आज इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट है जो अब हम शुरू करेंगे। ये तो समझ में आ गया। इसमें दूसरा पार्ट में है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमें बताना है। यस, जस्ट वेट। ओके, नाउ वेरीफाई करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में यूजिंग मीटर ब्रिज वेरीफाई
combination of resistor, that is series and parallel combination. इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. ओके, थ्योरी मीटर ब्रिज का जो पहले हमने सीखा है वो ऑलमोस्ट वही रहेगा. द मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर, जो कि पहला हमने डिस्कस किया था, and cross sectional area and fixed on wooden block, and a scale is attached to the block and 2 gaps are formed on it by using thick metal strip in order to make the Wheatstone bridge. Or terminal B between the gap is used to connect galvanometer. यानी ये जो टर्मिनल है ये इसे B कहेंगे, और जैसा कि पहले था वो व्हीटस्टोन ब्रिज है वैसा ही रहेगा, और इसको हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ये पहले भी किया जा चुका है, एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है. ठीक है, और करना क्या है कि जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, हम 2 या 2 से अधिक वायर को लेकर के इस तरह से कनेक्ट कर देंगे इंड टू इंड. उसके बाद अब देखिए X1 और X2 को हम सीरीज में कनेक्ट किए थे, इस तरह से कनेक्शन हुआ जिससे कि दोनों से सेम करंट पास करेगा. और उसके बाद जो so number of resistors are connected in series, the effective resistance is equal to sum of individual resistance. ठीक है, और ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, इसमें क्या होगा कि रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होगा. ये थ्योरी है, और ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें है. आपका ये देखिए, student learn the following concepts. Resistance in a circuit, when 2 resistors are connected in series, its equivalent resistance increases, and law of combination of resistors connected in series, and when 2 resistors connected in parallel, its equivalent resistance decreases, and law of combination of resistors connected in parallel. इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये था. अब हम प्रोसीजर पर चलते हैं कि इसमें प्रोसीजर क्या है. ओके, तो इसमें प्रोसीजर है मटेरियल रिक्वायर्ड पहले हम देखेंगे. मीटर ब्रिज चाहिए, बैटरी या लेकलेंथ से, गैल्वेनोमीटर चाहिए. रेसिस्टेंस बॉक्स में रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसका रेंज 0.1 ओम से लेकर के 10 ओम तक होना चाहिए. जॉकी की होना चाहिए, 1 वे की होना चाहिए, एंड 2 रेसिस्टेंस वायर्स. और चूंकि 2 रेसिस्टेंस वायर लेंगे तभी तो उसको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. और स्क्रू गॉज लेंगे, मीटर स्केल लेंगे, उसमें ऑलरेडी फिटेड रहता है, लेकिन मीटर स्केल एक अलग से भी चाहिए हमें, जिससे कि हम वायर का लेंथ मेजर कर सकते हैं. और एक सेट स्क्वायर भी साथ में रखेंगे कि नल पॉइंट एग्जैक्टली लोकेट कर पाए. उसके बाद कनेक्टिंग वायर. प्रोसीजर में क्या है, make sure you first draw circuit diagram and arrange the meter bridge apparatus as shown in this figure. ये देखो, यहां पर हम रेसिस्टेंस बॉक्स को लगाएंगे. फिगर में दिखने से ये राइट गैप है, और ये लेफ्ट गैप है. यहां पर हम उस वायर को कनेक्ट करेंगे जिसको हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, अब है connect the resistance wire whose resistance X is to be determined in gap G1, or in gap G2 we connect resistance box. Take care of no part of the wire forms a loop and minimum portion of the wire is used for connection. याद रखना है कि जो वायर को कनेक्ट कर रहे हैं वो उसमें कभी कहीं पर ट्विस्टिंग नहीं हो, नहीं तो वो लेंथ मेजर नहीं होगा ट्विस्टेड पार्ट का. ओके, दूसरा है कनेक्ट द रेसिस्टेंस बॉक्स ऑफ लो रेंज इन द गैप 2, और इस गैप में लो रेसिस्टेंस हम रेसिस्टेंस बॉक्स के हेल्प से इंसर्ट कर देंगे. एंड मेक ऑल द कनेक्शन एज इन द सर्किट डायग्राम एंड टेक आउट द रेसिस्टेंस से 2 ओम फ्रॉम द रेसिस्टेंस बॉक्स. यहां से 2 ओम वाला की निकाल लेंगे, और टच द जॉकी की जेंटली फर्स्ट एट द लेफ्ट एंड
and then at the right end of the wire of the bridge, and note the deflection in galvanometer. और डिफ्लेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो कनेक्शन सही है, connections are correct, and if the deflection is in one side only, then the some fault is there in the circuit, so the connections needed to be checked again. Now allow the jockey key gently to move or slide on the wire from A to C, from left to right, till galvanometer gives null deflection, यानी जीरो डिफ्लेक्शन जब तक वो दिखाता नहीं है. Galvanometer reads the zero value, उसी को null कहते हैं. The point where jockey key touches the wire is null point, उसे हम B कह देंगे और B को null point कहेंगे, और हम मेजर करेंगे A से B तक की लेंथ को, उसमें जो मीटर स्केल दिया हुआ उसकी सहायता से, और खास करके जहां पर नल दिखा रहा है जॉकी की को वहां स्टॉप कर लेंगे और सेट स्क्वायर को वहां सेट करेंगे, और उससे एग्जैक्ट नल पॉइंट हम डिसाइड कर लेंगे, और नल पॉइंट का ए से लेंथ कितना होगा वो मेजर कर लेंगे. प्लेस द जॉकी की इन द मिडिल ऑफ द वायर बिटवीन 45 cm to 55 cm and choose appropriate value of R for the resistance box such that galvanometer shows null deflection. अब समझ में आ गई बात. हम पहले से ही जॉकी की को 45 to 55 के बीच में कहीं रखेंगे और तब देखेंगे कि कौन सा रेसिस्टेंस हमें इसमें इंसर्ट करेंगे कि करंट जीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में और नल पॉइंट हमें मिल जाएगा. एंड ऑल्सो नोट द लेंथ CB, यानी A to B तो लेंथ हो गया L और C to B हो गया लेंथ, B to C हो गया लेंथ 100 माइनस L, वो कैलकुलेट कर लेंगे. और फिर हम रेसिस्टेंस इंटरचेंज कर लेंगे, रेसिस्टेंस X एंड R, यानी रेसिस्टेंस बॉक्स को और X को इंटरचेंज कर देंगे. रेसिस्टेंस बॉक्स फर्स्ट में सेकेंड गैप में था, उसको अब फर्स्ट गैप में ला देंगे और X को सेकेंड गैप में ले आएंगे. जेंटली मूव द जॉकी, फिर वैसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे. इसमें फिर हमें L मिलेगा. पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो L मिला है उसे L1 कहेंगे, सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में जो L मिला है उसे L2 कहेंगे. और अब L1 और L2 का मीन वैल्यू हम निकाल लेंगे और ये जो मीन वैल्यू आएगा उसे हम कहेंगे L. और अब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ये, यूजिंग दिस फॉर्मूला X इक्वल टू R इंटू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L, and we can find out unknown resistance. Mean value of unknown resistance calculated will be considered to be the value of unknown resistance. इस तरह से हम 2-4 रीडिंग लेंगे और उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमें रेसिस्टेंस मिल जाएगा. अब है कनेक्ट द टू रेसिस्टेंस X1 and X2 in series and repeat the experiment keeping this combination in gap G1 and vice versa and give the resistance of. और इस तरह से जिस तरह से पहले वाले को कैलकुलेट किए थे ठीक उसी प्रोसेस से X1 और X2 को कैलकुलेट कर लेंगे और उसको एड अप कर लेंगे. एड अप करने से जो वैल्यू आएगा वो अगर एक्यूरेट आ रहा है तो थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली वो एक्यूरेट आएगा. कनेक्ट द रेसिस्टेंस X1 एंड X2 इन पैरेलल और फिर उसी तरह का एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे स्टेप्स को. अब इसमें सिमुलेशन में है कि योर सिमुलेटर विल कंसिस्ट ऑफ मीटर ब्रिज केप्ट एट टेबल, उसमें ये सब डिवाइस रहेगा. तो ये तो हम पहले ही समझा चुके हैं. अब हम इसको एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. जो आपका वीडियो यहाँ है तब हम इसको समझेंगे. ओके, जरा देखिए. Meter bridge, law of combination of resistors. The property of a conductor to oppose the flow of charges through it is called its resistance. In this experiment, our aim is to verify the laws of resistance in series and parallel. Materials required: a meter bridge, jockey,
Leclanché cell, resistance box, galvanometer, key, connecting wires, wire cutter, scale, 2 resistance wires or 2 resistance coils and sandpaper. Procedure. First, make the connections as shown in the circuit diagram. Take a connecting wire and cut it using a wire cutter. Connect one end of the wire to the positive terminal of the Leclanché cell and the other end to terminal A of the meter bridge. Now, take another connecting wire and connect it between the negative terminal of the Leclanché cell and one end of the key. The other end of the key is connected to the terminal B of the meter bridge with another connecting wire. Now introduce the resistance box in the gap G1 of the meter bridge. Then take a resistance wire R1 and connect it in the gap G2 of the meter bridge. Since the resistance of the wire depends on its length, make sure that both ends of the resistance wire just touch on the gap. With other connecting wires, connect the positive terminal of the galvanometer to the central terminal of the meter bridge and negative terminal of the galvanometer to the jockey. Now insert the key and press the jockey near A and then near B. If the galvanometer deflections are in opposite directions, then the connections are correct. Now, press the jockey almost at the middle of the wire on the meter and introduce a suitable resistance R in the resistance box so that the galvanometer shows zero deflection. Measure the distance L1 from terminal A to the balancing point. Now, interchange the position of the resistance wire and resistance box in gaps G1 and G2. Measure the distance L2 from the terminal B to the balancing point. Then calculate the mean balancing length L. Then calculate unknown resistance using the equation X is equal to L whole divided by 100 minus L into R. Repeat the experiment for different values of R and mean value of the resistance gives the resistance X1 of the wire. After taking the measurements, remove the key and then the resistance wire R1. Now take the new resistance wire R2 and connect it in the gap G2 of the meter bridge. Insert the key and repeat the same steps for finding out the mean resistance of the resistance wire X2. After taking the values, remove the key and then the resistance wire R2. Now take two resistance wires R1 and R2 and connect it in series by joining the wires together. Introduce this combination in the gap G2 and resistance box in G1 and vice versa. Insert the key and repeat the experiment for different values of R and calculate the mean resistance XS using the equation XS is equal to L divided by 100 minus L into R. To verify the laws of resistance connected in series, calculate the theoretical value of XS using the equation XS is equal to X1 plus X2. If the experimental and theoretical values of XS are same, then the law of resistance in series is verified. Now, connect the resistance wires R1 and R2 in parallel in the gap G2 and resistance box in G1 and vice versa. Insert the key and repeat the experiment for different values of R and calculate the mean resistance XP using the equation XP is equal to L divided by 100 minus L into R. To verify the laws of resistance connected in parallel, calculate the theoretical value of XP using the equation XP is equal to X1 X2 whole divided by X1 plus X2. If the experimental and theoretical values of XP are the same, then the law of resistance in parallel is verified. Okay, so
we have seen animation for the experiment. Now simulation part is there. Let us check first one, series combination, and how to connect. Just try to understand. You see here, this is the meter bridge. Meter scale is provided there on the wooden platform, and this is the meter bridge here you see, and this scale is has shown, and this is the wire zoomed that so that it and this is galvanometer. Now connection is to be done. How? First of all, resistance box is to be connected. यहाँ रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट हो गया. उसके बाद हमें सेल को कनेक्शन करना है, तो एक एंड यहाँ से और एक एंड यहाँ से कनेक्ट होगा. ये ए होगा और ये सी है, तो इस ए को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट हो गया. और सी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए. उसके बाद रेसिस्टेंस वायर हमें 2 ठो लेना है, ताकि उसको सीरीज में हमें कनेक्ट करना होगा. ठीक है, ये देखिए, ये रेसिस्टेंस वायर है, ले लिए. इसका कैलकुलेट कर लेंगे, और चूंकि ये दोनों कंबाइन होके यहाँ आ गया है, ठीक है, इसलिए उसका कैलकुलेशन कर लेंगे. और बाकी सारा स्टेप्स वैसे ही है. यहाँ स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ एक रेसिस्टेंस इंसर्ट करना है बॉक्स के हेल्प से. लेट अस चेक. आ गया. ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट लगभग 2 ओम का रेसिस्टेंस इंसर्ट करते हैं. और इंसर्ट करने के बाद अब हमारा काम है, अब की यहाँ जो है की को इंसर्ट कर देना है. और यस, की हैज बीन इंसर्टेड. अब हमें करना क्या है, जो कि की को स्लाइड करना है टू फाइंड आउट नल पॉइंट. और ये देखिए स्लाइड कर रहे हैं. ओके, स्लाइड कर रहे हैं. ओके, इसमें फिटिंग वैसा ही है. जरा देखना है कि 0 पर किस लेंथ पर आ सकता है, क्योंकि वो 0 पर तो आ ही नहीं रहा है. हम मान के चले, फिर से अज्यूम करेंगे कि अगर 30 पर आकर के ये 29 है, 29 के बाद डायरेक्ट डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हम मान के चलें कि 29. ओके, और अगर यहाँ से थोड़ा भी इधर ले जाते हैं तो 28 हो गया. तो हम ऑन 28 पर इधर आ जा रहा है. इसका मतलब है कि नल पॉइंट 29 और 28 के बीच में कहीं होगा. ठीक है. दूसरी चीज हमने जो बताया था कि हम 45 और 55 के बीच में हम पहले इसको लेके चलते हैं. 45 और ओके, चलिए यहाँ